sorry, one concept, one question, and the chapter is, my dear friends, exemptions. Okay, before this, quickly I just want to tell you all कि दोस्तों 1.5 day strategy के लिए मुझे request आ रही है, how to write IDT paper, all of that discussion will be done by the end of the video. So if you want to directly hear that, ठीक है, तो आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाइए और क्या है, फटाफट से वो पार्ट को देख लीजिए, सो दैट यू कैन डेफिनेटली गेट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट ऑल यू गाइज हैव आस्क्ड. ओके, फटाफट से. अभी मुझे इसके रिलेशन में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, सो आई थॉट लेट मी जस्ट explain you these guys. This video will be legible for frankly all those students who are both South Indians and Hindi, because I will be on and off using both of them, so don't you worry. Okay, fatavat se let's do it, my dear friends. Exemptions. First of all, healthcare service. Understand, if you do these questions, you are also done with all the possible adjustments that are asked in exemption chapter. So don't you worry, don't you worry. Exemptions, आपको अगर Q&A में डाउट है, you can directly do it from your end of discussion. Okay, all the adjustments that can be possibly asked in an exemptions chapter, okay, from MTP, RTP and from past year papers, I have covered all of them here and here itself. So don't you worry, my dear friends. Okay, आ जाओ फटाफट से. ठीक है, बहुत मेहनत की है इसके लिए, लास्ट 3-4 दिन से यही काम कर रहा था मैं. Okay, and I think this will be really fruitful to you. Okay, फटाफट से. Understand one thing very clearly, my dear friends. Also, Sneha, if you can just send this link, okay, on the group, it will be great. Okay, yeah. Kokila Bain Limited provides bouquet of services. Okay, T is missing, bouquet of services. Okay, now tell me, for example, अगर वो रेकी healing services दे रही है, which is not a recognized system of medicine. Yes, okay, यहाँ पे बाकायदा एग्जाम में तो लिखा ही होगा, not a recognized system of medicine. ठीक है, ऐसा लिखा है उन्होंने. Then in that case, my dear friends, what will it be? Come on, फटाफट से आपको टैक्सेबल एग्जाम्प्ट ही बोलना है. टैक्सेबल के लिए टी लिखो, एग्जाम्प्ट के लिए ई लिखो, राइट? यस, एब्सोल्युटली इट इज टैक्सेबल. फटाफट से नेक्स्ट. कॉस्मेटिक सर्जरी बाय राखी सावंत फॉर ब्यूटिफिकेशन. Okay, definitely taxable. Pathological labs where COVID testing, blood testing services are provided. So if you remember, my dear friends, healthcare service में 3 aspects are covered. Yes, diagnosis, treatment and care. Okay, diagnosis, and this is what is diagnosis. Again, it will be exempt because it is covered under, my dear friends, okay, healthcare service. Okay, palliative care for bedridden patients. बताओ. By the way, am I audible, guys? Am I clearly audible? Okay, guys, we are back. Okay, we are back. Okay, फटाफट से next. Next is, my dear friends, palliative care for bedridden patients. Okay, so care is also a part of, my dear friends, healthcare service. Definitely. Okay, palliative care for bedridden patients, definitely, my dear friends. In this case, it will be what? Yes, it will be exempt. Okay. Also, I'm just sending guys the healthcare wala thing. I'm just sending here so that y'all can also make the most of it. Yeah, I've sent it on the Telegram group, right? In case people who are watching it for the first time, the link is in the caption. Okay, chalo fatapat. Yes, I've sent it in the Telegram group. Please check. Palliative care for bedridden patients exempt. IVF procedures. अभी नया क्या है ये clarification आया है. Even this, my dear friends, is understand exempt because it is under healthcare procedures. Important वाला mark कर दो, इसको नया आया है. Transportation of dead persons from hospital to graveyard. Tell me about this, my dear friends. Okay, in this case, very simple, my dear friends, it is not a supply. Don't say it is exempt. It is not a supply because it is covered under 7 subsection 2. Yes, I've tried to also merge supply here so that in exam, if they ask you something like this, आपको पता है कि क्या करना है. Preservation of stem cells. Tell me what will happen in this case, my dear friends. Very simple.
Initially it was exempt, now it is definitely taxable. Biomedical waste treatment operator, even this, my dear friends, is taxable. Please remember this. It is no more exempt anymore. The exemption has been withdrawn. Rent shops to brands like Armani, Gucci on the ground floor of the hospital. Initially, my dear friends, okay, it was taxable. Now also it is taxable. Rent rooms to a patient that costs 5,000. So renting a room up to 5,000 is definitely exempt. If it is more than 5,000, it is taxable. But if that room happens to be, my dear friends, an ICU, CCU, NICU, okay, then indefinitely, my dear friends, I will not check the monetary limit. It is always and always exempt, my dear friends. Next, runs its own restaurants and serves food to admitted patients. Admitted patients mein yaad rakhna, you have to write the note that since it is a composite supply, because the healthcare service and the catering services are given, or the restaurant service is given, and which are naturally bundled, which is why, my dear friends, the principal supplier happens to be healthcare service, and which is why it is exempt. Okay, perfect. Next क्या है, अगर क्या है आप ये नॉन एडमिटेड नर्सिस, नॉन एडमिटेड पेशेंट्स है, या फिर नर्सिस है, या विजिटर्स है, उनको दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा क्या, माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट, टैक्सेबल. होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, तो डेफिनेटली इट इज रेकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन. होम्योपैथी है, एलोपैथी है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है, ऑल ऑफ देम आर रेकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन. Okay, it's a recognized system of medicine. Definitely it is exempt. Air ambulance service, yes, it is okay, exempt, my dear friends. Okay, it doesn't matter if it's a service provided by clinical establishment or by private players, doesn't matter. Plastic surgery of acid attack victims, definitely it is exempt, because it is either for the way of trauma, okay, or for that matter, my dear friends, any illness. Okay, I hope that makes sense. Next is mortuary service for unclaimed dead bodies. Mortuary service, understand, mortuary service आपने कहाँ पढ़ा है? Yes, you have read under 7 subsection 2. It is not a supply. 7 subsection 2. So I would really want you to focus on this, right? They are important. The reason it is because generally people make mistakes here, big time. Are you getting it? Yes. Okay, that's it. Next is question number 2. Shiva Medical Center hires a senior doctor and consultant independently without entering into an employer-employee agreement. So he's a consultant, he's not an employee. Okay, these doctors provide consultation to patients who are admitted to the hospital for treatment without there being any contract with such patients. In return, they are paid consultancy by Shiva Medical Center. However, the money actually charged by Shiva Medical Center to its inpatients is higher than the consultancy. तो आज सिंपल सी बात है. इफ यू रिमेंबर आई हैड दिस एग्जांपल इन माय समरी नोट्स, दैट सिंपल, इफ फॉर एग्जांपल this is Shiva Medical Center, then in that case they are paying, let's say, 7,500 rupees to the senior doctors or consultants. Understand, they will not charge 7,500 rupees from the patient. They will charge, let's say, something like a 10,000 rupees. Why? Because they are retaining some money for providing services like what? Infrastructure facility, nursing care, blood pressure, temperature, paramedic care, emergency services, all of them they are keeping that retention money. Okay. The department took a stand that the senior doctors and consultants are providing services to Shiva Medical Center and not to the patients, hence their services are not healthcare services. Is that true? No, that is not true. The services that are given by the senior doctors and consultants to Shiva Medical and Shiva Medical to patients, both are considered as healthcare service, and which is why both are, my dear friends, what? Exempt, and exempt. Perfect. Okay, that's it, my dear friends. Okay, government services, my dear friends, is very important. Please check. Okay, Indian Railways CG is providing advertisement tariff services to Reliance. So here I am directly entering, my dear friends, exception of entry number 6, services provided to business entity, which is why I will also read it with entry number 7, which actually talks about government services to business entity. If the preceding financial year ka threshold limit does not exceed the registration ka threshold limit, then definitely it is exempt. But such exemption is not applicable to transportation of goods and passengers, the Department of Post, aircraft and vessel wala service, okay, and renting of immovable property wala service. Okay, so definitely, my dear friends, in this case, please understand that recipient is business entity. Yes,
Is the turnover more than the threshold limit? Yes. Okay, then in that case, please check whether the consideration that you have charged is more than 5,000 or not. Right? If it is more than 1,000, make it taxable and bring it as per RCM. It is more than 5,000, yes, it is as per RCM, and which is why in this case business entity, that is Reliance, will pay tax as per RCM. Okay, next. In the same services given to Reliance, but again understand in this scenario, my dear friends, okay, definitely the turnover in the previous financial year is more than the threshold limit, but the amount charge is only 4,000, which is why, okay, another entry comes into play, and which is why this becomes exempt. Got it? Yes. Okay, next, CISF, which is basically your police that you can see on the airport, is providing security service to Adani Limited. Okay, in preceding financial year, aggregate turnover was how much? Only 10 lakhs, my dear friends, only 10 lakhs, which is less than the threshold limit, right? 4 लाख रुपया चार्ज किया, एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर विच एंट्री? एंट्री नंबर 6, यहाँ पे 4,000, ये भी क्या हो जाएगा? एंट्री नंबर 6 के अंदर ही डाल दो आप. ओके, entry number 7 के अंदर, sorry, entry number 7, my bad, this is under entry number 7, this is also under entry number 7, because the turnover does not exceed the threshold limit. अच्छा, Department of Post is supplying postcard services, envelope weighing. Understand that Department of Post services are covered under the exception of entry 6, but there is a new exemption that has recently been entered, where you are giving any postcard service, inland card service, where the envelopes are weighing, okay, up to 10 grams, तो फिर वो क्या है? exempt है. If it is more than that, then it is definitely taxable. So 5 grams is falling within the limit, which is why it is exempt. 15 grams taxable. अच्छा, Department of Post is supplying speed postal service to Mr. Kohli, my dear friends. Okay, understand, definitely it is taxable, and who will pay the tax? Department of Post will pay the tax as per, okay, FCM. Here also Department of Post will pay tax as per FCM. ठीक है, perfect. Next is CG is providing renting of immovable property service to Mr. Vijay Sarda, a registered person, my dear friends. Okay, क्या हो जाएगा यहाँ पे? Definitely recipient is a registered person, and definitely यहाँ पे लग जाएगा RCM. Okay, and Mr. Vijay Sarda will pay the tax. Next, CG is providing renting of immovable property service to Mr. Shubham. Okay, next is an unregistered person. तो यहाँ पे understand that recipient is an unregistered person. So in that case, very simple, the situation is very simple, my dear friends. In this case, it is definitely what, my dear friends? Correct. It is exempt. Okay, it is exempt. Okay, I'm so sorry, my bad. In this case, it is FCM. It is CG who will pay the tax. Okay, तो याद रखना, CGSG UTLA providing renting of immovable property service to a registered person, RCM. If not, then as per FCM. Very simple. Okay, my bad. Maharashtra state government is providing advertisement service to CG. Understand, CG providing service to SG or vice versa. Okay, it is exempt. Okay, but understand that those services should not be Department of Post wala, transportation of passenger and goods wala, and अपना वो aircraft vessel wala. CG is supplying boarding lodging service to senior citizen, where it charges them 20,000 rupees. Tell me, is the supplier CG? Yes. Lodging boarding? Yes. What is the amount charged? 20,000. Less than 25,000? Yes. Is the service provided to senior citizen 60 age and more? Yes. Definitely in this case it will be exempt. But my dear friends, if that amount charge is 40,000, more than 25, definitely हो जाएगा taxable. Okay, Ram Limited is supplying service of maintenance in street in a municipal area where the functions are mentioned in 243W. Okay, and in this case, understand that the goods part, okay, that are representing, okay, is 35% of the supply to the state government. Understand, it is not 25%. The goods part constitute 35%, which is why it is taxable, right? Because the maximum thing that you can possibly do is give a composite supply where the goods component is not more than 25%. ये बहुत important है, कई बार पूछा गया है, so please remember this. Next,
Service of brochure distribution provided under training program for which 70% of the total expenditure is borne by government. Understand my dear friends in this scenario, right? Understand my dear friends in this scenario, very 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 simple. Okay, 70% है, जबकि क्या है, the limit is 75%. Minimum 75% of the total expenditure should be borne by whom? By the government, and which is why my dear friends it will be what? Taxable. Okay, here. Okay, next is here is 80%, so definitely this is exempt. Next is CG is supplying manpower service for cleanliness of roads not involving supply of goods. Such function mentioned in Article 243G. Definitely in this case, again my dear friends, okay, this is just pure service. Understand, this is pure service. This will be covered under entry number 3. Entry number 3. Okay, again it will be what? Exempt. Next is service provided by fair price shops by arm limited by the way of sale of sugar under PDS. Definitely in this case also it will be exempt. Next, yeah, my dear friends, Jio has applied for registration under Companies Act to ROC. So if you remember my dear friends, if you are basically registering under any act, even that service is exempt. Okay, your XYZ had paid to Customs Department 50,000 on account of merchant overtime charges, right? Again it is exempt. Indian Railway CG is providing transportation of passenger service in first class local. Okay, understand it is taxable because it falls under the exception of entry number 6, and it also is not covered under any other entry, hence it is taxable. And obviously in this case it is CG who will pay the tax as per FCM. Okay, again CG is providing transportation of passenger service in second class. Okay, understand my dear friends, it is outside the purview of 6, but it is definitely covered under some other entry where we know कि second class में travel करते हैं, तो definitely it is exempt and no one will pay the tax. Is that very clear my dear friends? Yes. Next is फटाफट से RWM में there are two types of sums that can be asked. First is the limit वाला, okay, where Gokul Dham Society collects, for example, on these are all independent cases, remember, ठीक है, 4 independent cases. So Gokul Dham collects monthly maintenance 5,000 and total collection is 50 lakhs. What will happen here? Understand that the charge that they are charging to every member is less than 7,500. Hence the service is only exempt. Now doesn't matter if it is over 5 lakhs or 50 lakhs, it will be always exempt and exempt. Okay, which is why it doesn't matter कि 50 lakhs हो या 10 lakhs हो, if the limit is the same, less than 7,500, it will be exempt, right? Next, Rajai Society collects monthly maintenance 15,000, total connection 10 lakhs. Definitely the service is taxable here, but the total turnover, aggregate turnover is not exceeding 20 lakhs, and which is why my dear friends, very simple here, okay, it will be exempt because your personal threshold level will save you actually. Acha, Nirmal Society collects monthly maintenance charges of 15,000 and the total collection is 50 lakhs. It is taxable. So always here the best hack is that your, okay, understand that your service ka threshold limit should be exceeded, okay, and your personal threshold limit, okay, of what? Correct, okay, of what? Tell me yaar, come on. 20 lakhs. That should also be exceeded. Is that very clear? Yes. Only then it will be taxable, only then will it be taxable. Okay, I hope that does make sense. Okay, perfect. Next, my dear friends, question number 5. Gokul Dham Society collects monthly maintenance charges 5,000. Okay, now this is a very beautiful sum and this is what I think can be asked in the exam. Please understand that it is very important and you will tell me what is it. So monthly maintenance charges 5,000, sinking fund charges 3,000, parking 2,000, repairs and maintenance fund 4,000, property tax 500, अपना water tax 2,000 from members of society, and the society incurs following expenses like gardening charges, security service, plumbing charges, spare parts. Inputs का जो है वो 12% है और tax का rate है 18%. You tell me what is the total MMC? What is the total MMC charge? Because that we will multiply with understand that we will multiply with 18% and that we will reduce by ITC. Okay,
एंड जो भी क्या है ITC अगर मिलेगा इन केस, और वो भी ITC याद रखना तभी मिलेगा व्हेन MMC इज मोर देन 7,500, राइट। तो उसका क्या है, अगर मिलेगा तो फिर क्या है, उसका जो भी अमाउंट होगा मल्टीप्लाई करेंगे 12% के साथ, माइनस करेंगे, एंड वट एवर इज द नेट कैश पेबल विल बी द आंसर। ओके, तो यू टेल मी इन दिस इनोवेटिव सम what will be the total MMC. This can be asked. Please mark this very, very, very important. Please mark this very important question. Right? It's a good one. Okay. So let me tell you, my dear friends. Will you include this? Yes. This, yes. This, yes. This, yes. No, you will not include this. Okay. तो आज आप ये दोनों इंक्लूड नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स वाटर टैक्स नहीं इंक्लूड करेंगे। सो इफ यू मेक द टोटल 5,000 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, तो यहाँ पे 14,000 आ जाएगा अपना, ठीक है। एंड 14,000 is more than 7,500. Yes, definitely the service is taxable. And yeah, also remember that यहाँ पे बस एक छोटा सा क्या नोट लिख देता हूँ मैं, that the threshold limit is exhausted, that the threshold limit of 20 lakhs is not applicable, ठीक है। yes, तो आज इस सिनेरियो में ये एक सिचुएशन है। दूसरा ITC वाला सीन क्या है, ITC वाले में यू विल गेट द ITC ऑफ एवरीथिंग, गार्डनिंग चार्जेस, सिक्योरिटी, प्लम्बिंग, स्पेयर पार्ट्स। तो 1,000, 4,000, 6,000, 7,000, राइट। तो 14,000 मल्टीप्लाई बाई 18% एंड 7,000 मल्टीप्लाई बाई 12%। जो भी आएगा आंसर माइनस कर दो, एंड जो भी आएगा खत्म बात। इज दैट वेरी क्लियर? यस, ओके। Other expenses, as in which expenses, beta? All those expenses which are used for the RWA to provide the service, they all are definitely in the course or furtherance of business ITC मिल जाएगा। Okay, okay, next, miscellaneous chapter. Miscellaneous chapter, people tend to forget, people tend to ignore, but very important. Sometimes they can ask something very tricky out of this, which is why I've taken it earlier only. Okay, where their favorite is foreign diplomatic mission wala, business exhibition wala, and that life micro insurance wala, and there are 3-4 योजनाs that I have asked you all to mark important, बस वही पूछा जाता है। तो services provided by US embassy, that is by foreign diplomatic mission, exempt. To foreign diplomatic mission, taxable. Okay, foreign diplomatic mission is nothing but foreign embassy. As a services provided by organizing business exhibition in Delhi, taxable. In London, exempt. Yes, outside India it is exempt, inside India it is taxable. As a services by collecting news by independent journalists to news channel, exempt. Life micro insurance sold by LIC to policyholder where the coverage amount is 1 lakh rupees. Where the coverage amount is 1 lakh rupees, okay, so it is up to 2 lakhs, exempt. 5 lakhs, so it is more than 2 lakhs, it is taxable. परफेक्ट, ठीक है, यस। अच्छा, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट से देख लीजिए एजुकेशन सर्विस। एजुकेशन सर्विस में याद रखना, ओके, सबसे पहला ट्रांसपोर्ट। अभी आप हो क्या, A2X सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर GST एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज, ठीक है, ओके, कोई टेंशन ही नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट एंड स्टाफ ऑफ लव AH, अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, राइट। अंडरस्टैंड दैट इज इट अ प्री स्कूल? नो। इज इट अ हाई स्कूल? नो। तो डेफिनेटली ये हो जाएगा क्या, taxable. Catering services provided to rank CBSE. Catering services provided to rank CBSE school. Catering service provided to rank CBSE school. What does that mean? फटाफट से बताओ यार। ओके, तो याद रखो 5 सर्विसेज थी, इफ यू रिमेंबर। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, केटरिंग, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, ये 5 सर्विसेज अगर आप दे रहे हो किसको, रैंक CBSE स्कूल को, यानी प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल तक, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा क्या,
exempt. Okay, exempt. Okay, perfect. Next, security services provided to Win CBSE school for its annual sports day held at Sai Sports Complex owned by Government of India. Owned by Government of India. Okay, what does that mean? What does that mean? Very simple, my dear friends. Okay, it will be taxable because it is outside, and outside वाले में याद रखना security service, okay, housekeeping and cleaning. If these three services are outside the school campus, taxable. Okay, please. Supply of online periodical journals to Merit CBSE school for its higher secondary. Understand, online journals ka use generally is by those institutions that give degree which is recognized by Indian law, something like ICI, something like Mumbai University, not by school, which is why it is taxable, because it is not taken by whom? People, institutions who give degree. This is a very good question, and the reason of the same is, my dear friends, very simple, because it is asked in the exam. Next, services in relation to placement of students to skill, a government vocational training. Okay, a government vocational training college. Now services in relation to placement of students, तो placement of students taxable ही होता है बेटा, ठीक है. Fees okay, fees from prospective employers for campus interview, again it is taxable. 5 buses each with sitting capacity of 40 passengers given on hire to state transport unit. तो यहाँ पे आपने भाड़े पे क्या दिया है? मोटर व्हीकल, और वो मोटर व्हीकल का सिटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 12. यस, टू whom state transport unit, definitely it is what, my difference, exempt. Okay, receipts of Shiny, a commercial coaching providing coaching in the field of commerce, definitely it is what, my dear friends, taxable. Interest received on FDs on the company with, again it is what, my dear friends, exempt. Okay, this might not be directly related to education, but अभी आ गया तो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट क्या है? receipts from, okay, receipts from, my dear friends, understand, receipts from running a boarding school, definitely it is exempt, my dear friends, because as per composite supply they are giving education and, okay, accommodation service where the palda bhari, where the principal supply is of education. Receipts of Shikshit Samuday, ITI, definitely it is exempt, my dear friends, because it's affiliated with NCVT. Next, receipts of Pratibha Institute, and institute registered with Directorate General of Employment and Training, okay, और ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से भी है, exempt. प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एफडीएम, को कोई भी सर्विसेज दोगे तो टैक्सेबल है, पर एफडीएम अगर सर्विस दे रहा है तो होता है exempt. अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना भाई. ओके, यस, चाणक्य एकेडमी है, ओके, और वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है. इट रन्स द फॉलोइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस: केशव इंस्टीट्यूट, अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज in Ghaziabad. KIT also runs distance learning PG programs. Exams for such programs are conducted in selected cities. All engineering courses, including the distance, okay, are in this scenario recognized by law. खत्म, exempt हो जाएगा सीधा. लिटिल मिल प्री स्कूल है तो प्री स्कूल तो एग्जाम्ट है ही बेटा. ब्राइट मैन द कोचिंग खत्म, पढ़ूंगा ही नहीं आगे में, क्या है. ओके, स्प्रिंग मॉडल, अच्छा ये भी स्कूल ही है, हाई स्कूल है, माय डियर फ्रेंड्स, हायर सेकेंडरी, ये भी हो जाएगा एग्जेम्प्ट. ओके, परफेक्ट है, ठीक है. तो ये बेटा, ये लोग जो सर्विस दे रहे हैं वो क्या है? टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट होगी अकॉर्डिंगली. सिर्फ इतना मैं बोलना चाहता था. अभी द अकेडमी प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस रन बाय इट ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू सितंबर. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो अभी हुआ क्या है, देखो, फ्रैंकली क्या है, उन्होंने क्या किया, ये सब खर्चे किए. तो फ्रैंकली उनको अभी क्या है, कौन सा एंगल चेक करना है? टू अ ग्रेट एक्सटेंट उनको वो एंगल चेक करना है वेयर द सर्विस इज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट. तो अभी देखो, सिंपल सी बात है दोस्तों, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने पूरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो 2 पार्ट में डिवाइड किया था. एक था
एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट। तो ऊपर जो था फ्रेंकली क्या है, हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है, ओके। अगर आप चेक करेंगे बराबर से, इस पर ध्यान ना देते हुए, तो उस पर सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया, जिसका हम लोगों ने टैक्सेबिलिटी पहले ध्यान में रखा है कि इनकेस इनका अगर कोई रिसीट्स हमको दिख रहा है आगे जाके, तो वो एग्जाम टैक्सेबल हम लोग पहले से ही टैग करके रख देते। और फ्रेंकली लुकिंग एट द क्वेश्चन वी कैन इजीली डिटरमाइन कि यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है, क्या देख लो, विद द हेल्प ऑफ द अबव डिटेल्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल इफ एनी ऑन गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड, ठीक है। और पेबल का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आप देख लो कौन सा टैक्सेबल है, कौन सा एग्जेम्प्ट है, कौन सा आरसीएम आएगा, कौन सा एफसीएम आएगा, देख लो भैया, ठीक है। दैट्स इट। गुड्स पे 12% है, ओके, केटरिंग पे 5% है और अदर पे 18% है, तो वो देख लेना, ठीक है। अब आप सीधा फटाफट से बता दो मुझे क्या सिनेरियो होगा, टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, फटाफट से चलो, ओके। प्रिंटिंग सर्विसेज फॉर प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर्स, पेपर एंड द कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो यहाँ पे प्रिंटिंग सर्विसेज दिया गया है, ओके, फॉर प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर्स, और यहाँ पे KIT है, ब्राइट है, स्प्रिंग है। अभी मैं क्या करता हूँ, ऊपर पहले क्या उनका नाम लिख देता हूँ कि वो एक्चुअली है क्या। तो लेट्स से इफ यू नो केशव वाला था, तो वो बेसिकली क्या है, डिग्री देता है विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय लॉ। लिटिल मिलेनियम क्या है, प्री स्कूल है, तो आई विल नेम इट दैट वे। ब्राइट माइंड्स क्या है, ब्राइट माइंड्स क्या है, इट्स अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। और स्प्रिंग मॉडल क्या है, वो HSC वाला है, ठीक है। तो क्या अपने को पता है कि रिसिपेंट कौन है, बिकॉज बहुत फर्क पड़ता है कि रिसिपेंट कौन है माय डियर फ्रेंड्स, राइट, यस। तो आपने क्वेश्चन पेपर का सर्विस दिया है, बेसिकली कंडक्टिंग एग्जाम का सर्विस दिया है। तो इफ यू नो दैट कंडक्टिंग एग्जाम का सर्विस गिवन टू एनी इंस्टीट्यूट विच इज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एनी इंस्टीट्यूट विच इज अ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो डेफिनेटली हो जाता है एग्जेम्प्ट, ओके। एंड आपको पता है कि आज कोचिंग वाला जो है, कोचिंग वाला ब्राइट माइंड्स वाला जो, उसमें सब टैक्सेबल होगा। मैं अभी से बोल देता हूँ क्यों, बिकॉज दैट इज नॉट एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दैट डज नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच दे हैव गिवन अस इन द एग्जाम्शन। तो उसमें तो सभी सर्विसेज में आंख बंद करके टैक्सेबल करवा लूंगा। दूसरा, ओके, ये केस में सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ जाती है, तो डेफिनेटली इन दैट केस अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, ओके, KIT ने लिया है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। प्री स्कूल ने तो लिया ही नहीं है, कोचिंग वाले ने लिया है, टैक्सेबल हो जाएगा। HSC वाले ने लिया है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। पेपर प्रोक्योर्ड फॉर प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर्स, अगेन दिस इज अ सर्विस इन रिलेशन टू कंडक्टिंग एग्जाम्स, राइट। अगेन दिस विल बी व्हाट, एग्जाम्प्ट, टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट। ऑनरेरियम टू पेपर सेटर्स, अभी ये भी तो क्या कंडक्टिंग एग्जाम्स के रिलेशन में ही है बात, तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट, ओके, ठीक है। KIT ने पैसा दिया तो एग्जाम्प्ट, ओके। नेक्स्ट इज रेंट फॉर एग्जाम सेंटर्स टेकन ऑन रेंट लाइक स्कूल्स, ओके। तो ये भी तो क्या है यार, इट इज इन रिलेशन टू व्हाट, कंडक्टिंग एग्जाम्स, तो अगेन दिस इज एग्जाम्प्ट एंड दिस इज टैक्सेबल। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन फॉर ऑनलाइन जर्नल्स, ओके। और यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स, लिटिल मीडियम हैज टेकन द सब्सक्रिप्शन फॉर ऑनलाइन जर्नल्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल। अभी इसमें देखो चारों ने लिया है, चारों ने लिया है, अगर आप देख रहे हो तो इसमें याद रखना ऑनलाइन जर्नल में तो किसको एग्जेम्पशन दिया, वेयर द रिसिपेंट इज समवन लाइक एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली डिग्री देता है, समथिंग लाइक एन IIM और ICI और MU, राइट। तो इन दैट केस ये डिग्री वालों को ही क्या दिया जाएगा, एग्जेम्पशन, ओके। तो यही एग्जेम्प्ट होगा, दूसरा सब हो जाएगा क्या, टैक्सेबल, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट, हायर चार्जेस, okay, higher charges for buses used to transport students and faculty from their residence to institutions and back, okay। तो आज सिंपल सी बात है, हायर चार्जेस फॉर बसेस यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिया है आपने और किसने लिया है, तो याद रखना किसी ने भी लिया हो एग्जाम्शन तो मिलेगा प्री स्कूल से लेके HSC वालों तक को। तो किसको मिलेगा, लिटिल मीडियम एंड अपना स्प्रिंग मॉडल, ठीक है।
दूसरे सबको टैक्सेबल। नेक्स्ट, केटरिंग सर्विस फॉर रनिंग अ कैंटीन इन द कैंपस फॉर स्टूडेंट्स, इस केस में क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? टेल मी। तो यहाँ पे भी सबने ही लिया है, तो ये केटरिंग सर्विस अगेन किसको हो जाएगा? प्री स्कूल और HSC वाले, दूसरे सबको टैक्सेबल। सिक्योरिटी भी इन द सेम सिनेरियो वही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, परफेक्ट। अच्छा, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विस फॉर स्प्रिंग मॉडल इंक्लूड अ सम ऑफ 80,000 पेबल। अच्छा देखो 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 जरा देखो, इसमें थोड़ा लोचा है, देख लो कुछ दिया है यहाँ पे। सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विस फॉर स्प्रिंग मॉडल क्या है? HSC वाला है। ओके, 80,000 payable for security and housekeeping at a student event organized in a banquet hall outside the campus. 80,000 payable for security and housekeeping. Okay. So as in this case, please understand that we are talking only with respect to spring model. That is this. तो इसमें से याद रखना 465 का क्या है? एक बाइफर्केशन हो जाएगा 80 एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 80,000 will be taxable, remaining will be exempt because 80,000 is a service given outside the school campus. Is low. Okay, is this audible guys? Is this audible? अभी सही है? अरे भाई आप बोला करो ज़रा भी, अगर ड्रॉप होता है ना तो आप बोला करो प्लीज़, ठीक है? दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। आंसर आप डेफिनेटली क्या है एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, डोंट यू वरी, जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल दैट जस्ट चेक इट। मैंने मेरे एंड पे बता दिया है, बट या सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, दिस इज़ लाइक अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। तो प्लीज़ क्या है इसको आप इम्पोर्टेंस देना। ओके, लाइक ये अगर ये सब टाइप के कैलिबर के सम सॉल्व कर लिए ना, खत्म है बात। ओके, लाइक देर इज नथिंग एल्स। द ऑडियो, हेलो, okay, I wasn't speaking. Acha, is this correct now? Hello guys. Okay, yeah, looks like it's good now. It's good. Okay, ठीक। तो अगर आपने ये सब सॉल्व कर लिए ना तो माँ कसम जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, टेंशन लो ही मत आप, ठीक है? नेक्स्ट देख लो, डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर GST। fees charged from office staff for in-house hospitality sorry in-house personality development course conducted by Mungi Ral college providing education as a part of curriculum for obtaining qualification recognized by Indian law। okay, हो जाएगा क्या? very simple, exempt। एक सेकंड रुक जाइए। fees charged from office staff for in-house personality development course conducted by okay Mungi Ral college providing education as a part of curriculum। okay, understand here that the college is providing service to the staff for which they are collecting money from the staff। now understand, any service provided by the education institution to its student faculty staff is always going to be exempt। okay, always going to be exempt, ठीक है? प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट,
bus fees collected from students by Rosemary College providing education as a part of curriculum for obtaining okay. अभी यहाँ पे बस फीस कलेक्टेड किया है किससे? स्टूडेंट से, बाय रोजमेरी कॉलेज. नाउ अंडरस्टैंड, रोजमेरी कॉलेज इज व्हाट? इट्स एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस टू स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट से पैसा ले रहा है. अगेन एग्जेम्प्ट. अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या बात हो रही है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस टू स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ. अभी वो कोई भी सर्विस हो, एनी सर्विस, it is exempt. It is exempt. This is the final verdict. ये चीज याद रखना. ये चीज काफी लोग भूल जाते हैं, इसको याद भी नहीं आती है पब्लिक को. ठीक है, तो ऊपर मैंने क्या करवाया? टू वाला पार्ट करवाया. अंडरस्टैंड, ऊपर मैंने क्या करवाया? टू वाला पार्ट करवाया. सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे मैंने क्या करवाया? सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. गॉट इट? ये बाप क्वेश्चन है, बाप क्वेश्चन है. ओके Okay, are you all able to see me? Are you all able to hear me, guys? मैं सिर्फ दिखा देता हूँ, शायद ये फ्रीज हो गया है, if I'm not wrong. Yeah, I was just talking about this. Okay, just check this in case you haven't seen. Just check this properly. Okay, सही है. अच्छा, थर्ड वाला क्या है? हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लीनवेल. ओके, मेजर्स क्लीनवेल टू Montessori school, a play school. Now understand, here service is provided to the play school, to the preschool. Again, it will be exempt. Cleaning school है, sorry, housekeeping service. ठीक है. And the last is info link supplied tracing alphabets and online education students to students of UKG class of Montessori school. Again, it will be taxable. Why? क्योंकि ऑनलाइन जर्नल वाला सर्विस कब एग्जेम्प्ट होता है? व्हेन द रिसिपेंट इज करेक्ट, एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो क्या है? डिग्री देता है. ठीक है, ये प्री स्कूल से लेके HEC वालों को ये अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है. इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस. ओके ओके, नाउ वी आर हेडिंग टू द लास्ट पार्ट माय डियर फ्रेंड्स. फटाफट से देख लो. चैरिटेबल ट्रस्ट, तो याद रखो ये 12AB के अंदर क्या है? आता है, ये 12AB के अंदर आता है, ये 12AB के अंदर आता है. ओके, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. अच्छा, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल यूज, याद रखना वो हमेशा रहेगा क्या? एग्जेम्प्ट, बिकॉज पिलग्रिम्स जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होंगे. ठीक है. नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर पिलग्रिम्स. अंडरस्टैंड वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, चार्जेस पर डे 1200 रुपया. तो बोल दिया 999 का लिमिट याद रखना है, 999 का लिमिट. ओके, फॉर रूम्स इट्स 999. ओके, प्लीज रिमेंबर दैट. टैक्सेबल. रूम्स अगेन 750 लेस देन 999, एग्जेम्प्ट. कल्याण मंडपम के लिए है 4 times 9, 9999. तो यहाँ पे 15,000 है, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट. शॉप्स के लिए भी वही भाड़ा दिया है. ओके, उससे कम है, यस, एग्जेम्प्ट. से ज़्यादा है, यस, टैक्सेबल. ठीक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में माय डियर फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर वन थिंग. ओके, अमाउंट रिसीव्ड फॉर. अच्छा, इसमें मैं आगे जाऊँ ना, उसके पहले एक चीज़ याद रख लेना. ओके, ये चैरिटेबल ट्रस्ट में जनरली, ओके, प्लीज रिमेंबर, दे ऑफन आस्क, दिस इज द सेकेंड पार्ट. इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट पार्ट, दैट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इफ दे गिव सर्विसेज रिलेटेड टू preservation of wildlife, then skill development and education, राइट, देन वो फैमिली प्लानिंग, फिर वो एड्स वाला और वो सब है ना, उसमें काउंसलिंग वगैरह. तो उसमें याद रखना वो एज लिमिट वाला याद रखना प्लीज़. दैट स्किल एंड एजुकेशन डेवलपमेंट फॉर पीपल एजेड मोर देन 65 years of age इन रूरल एरिया, एग्जेम्प्ट. अर्बन टैक्सेबल, वो वाला याद रख लेना. दैट्स इट. ठीक है. नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव, हाँ वही मैंने दिया है, देखो यहाँ पे.
अमाउंट रिसीव फॉर एजुकेटिंग ओल्ड एज पीपल ऑफ 60 years ऑफ एज क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? टैक्सेबल. 70 एग्जेम्प्ट. ओह, अगेन टैक्सेबल. वाई? बिकॉज दिस इज अर्बन एरिया. हाँ, बट रूरल एरिया है तो एग्जेम्प्ट. अमाउंट रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, हाँ, by such charitable institutions. Okay, by such charitable institutions. Okay, amount received for providing advertisement services by such charitable institutions under 12AA या 12AB to let's say RIL Limited. तो डेफिनेटली ये भी हो जाएगा टैक्सेबल, बिकॉज ये उनमें आता ही नहीं था. इफ यू रिमेंबर, वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आता ही नहीं है. Services are provided to charitable activities, even this is taxable. Why? Because the only thing covered was services provided by charitable activities, not to. Okay, please remember that very well. अच्छा, tour operator service, my dear friends, please remember tour operator service में. Okay, Thomas Cook registered in Delhi, sold a tour package of Shimla to Mr. Putin. अभी शिमला है तो पूरा इंडिया में ही है, taxable, because services consumed in India, GST will be paid in India. Registered in Delhi, sold a tour package of Ukraine to Mr. Putin. ले यूक्रेन में ही भेज रहा है सीधा, इसलिए वार करवाया लगता है. एग्जेम्प्ट, क्योंकि पूरी रात वो कहाँ बिता रहा है बेटा? 10 दिन का पैकेज है जो उसने अभी क्या 1 साल लगा दिया उसको. ठीक है, एग्जेम्प्ट. पूरा आउटसाइड इंडिया ही है और फॉरेन टूरिस्ट को ही है. अच्छा, थॉमस कुक सोल्ड टूर पैकेज ऑफ 10 नाइट, जिसमें 3 नाइट है नेपाल में, 7 नाइट है कहाँ पे? सिक्किम में. 1 लाख का पैकेज है, 30% है फॉरेन में. तो बोल दिया है जितनी आप रातें स्पेंड करते हो और 50% विच एवर इज लोअर. तो आज सिंपल सी बात है माय डिफरेंस, इन दैट सिनेरियो 30%, यानी कि 30,000 और 50,000, तो 30,000 हो जाएगा क्या? 1 लाख में से 30,000 हो जाएगा एग्जेम्प्ट, एंड 70,000 हो जाएगा क्या? टैक्सेबल. बिकॉज उतनी रातें उसने कहाँ बिताई है बेटा? इंडिया में. नेक्स्ट, Thomas Cook sold a tour package of 10 nights, 8 nights in Nepal, 2 nights in Sikkim. Okay, so again in this case understand it is 8 nights, that is 80%. तो 80% और 50% whichever is lower. तो आज इसमें भले ही 8 नाइट उसने बाहर बिताई है, पर मैक्सिमम एग्जेम्पशन 50% मिलेगा. तो 50,000 हो जाएगा एग्जेम्प्ट एंड 50,000 हो जाएगा टैक्सेबल. प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस. XYZ लिमिटेड प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज. तो आज उसने कस्टमर एक और रिक्शा में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर दिया है, और ये कुछ लिखा है कि बुक हुआ है थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, नहीं, तो हो जाएगा क्या? एग्जेम्प्ट. अच्छा, मीटर्ड कैब है बट बुक थ्रू रैपिडो, डेफिनेटली हो जाएगा टैक्सेबल. और इसमें टैक्स भी कौन पे करेगा? XYZ लिमिटेड? नो, टैक्स विल बी पेड बाय रैपिडो. एंड अंडर विच सेक्शन? 9(5). वेरी इंपॉर्टेंट, ये गूगल ही आ सकता है आपको. टैक्सेबल एग्जाम तो पूछेंगे, ये भी पूछ लेंगे कौन पे करेगा टैक्स, तो प्लीज़ उसमें 9(5) का नाम लिख देना, बिकॉज 9(5) में भी ये रेलिवेंट अमेंडमेंट आ चुका है. ओके, नेक्स्ट इज इन रेडियो टैक्सीज माय डियर फ्रेंड्स, ही बुक थ्रू ऊबर. तो अंडरस्टैंड, ओके, इवन इन दिस केस माय डियर फ्रेंड्स, ओके, इट इज टैक्सेबल. अगेन ऊबर विल ओनली पे द टैक्स एज पर 9(5). नेक्स्ट, AC bus that picks him from Mumbai and drops directly to Pune without stopping in between, that is, in this case definitely it is a contract carriage my dear friends, and it is a AC contract carriage, taxable. Non-AC bus that picks him from Mumbai and drops directly to Surat without stopping in between and is meant for the purpose of hire charter tourism, taxable. Though it is non-AC but it is meant for the purpose of hire charter tourism, taxable. Stage carriage है exempt. अच्छा, question number 14. Indigo is providing transportation of passenger service to whom? Customer A, through air, Mumbai to Kashmir, economy class, taxable. Mumbai to Bagdogra, West Bengal, economy class, exempt. Mumbai to Bagdogra in business class, taxable. Inland waterways, exempt. Cruise, Mumbai to Goa, taxable. Why? Because अगर आप क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, that is not predominantly for the purpose of tourism, taxable. तो क्रूज़ है, शिकारा है, जहाँ पे आपको साइट सीइंग करवाया जाता है, खानी पीनी दिया जाता है, टैक्सेबल. बट फ्रॉम चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर इन अ वेसल, दैट इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इट इज नॉट मेंट फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म, एग्जेम्प्ट.
अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करें तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड शिपिंग कंपनी प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विस टू वाई लिमिटेड वेयर द रूट वॉज वाया इनलैंड वाटरवेज फ्रॉम मुंबई टू पुणे। क्या हो जाएगा? इनलैंड वाटरवेज है, बात खत्म, एग्जेम्प्ट। ओके, वाया अरेबियन सी फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू चेन्नई पोर्ट। ओके, मुंबई पोर्ट टू चेन्नई पोर्ट, अरेबियन सी, तो यह इनलैंड वाटरवेज है? नहीं, ये बाहर से आ रहा है, इंडिया के बाहर से आ रहा है। इंडिया के बाहर से आ रहा है यानी जो वाटर बॉडीज है दैट इज नॉट इनसाइड इंडिया, दैट इज आउटसाइड इंडिया। ओके, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द लैंड मास ऑफ इंडिया बेसिकली, टैक्सेबल। शिपिंग कंपनी प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विस टू वाई लिमिटेड फ्रॉम यूएस पोर्ट टू मुंबई कस्टम्स पोर्ट, अगेन शिपिंग कंपनी है, टैक्सेबल, रिमेंबर दैट। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू माय डियर फ्रेंड्स, ओके, याद रखना इन केस ऑफ वाटरवेज इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो दोनों टैक्सेबल है, बट इन केस ऑफ एयरवेज इंपोर्ट इज एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट इज टैक्सेबल। तो बाहर से अंदर आ रहा है इंडिया के, एग्जेम्प्ट वाया एयर, बट इंडिया से बाहर जा रहा है वाया एयर तो हो जाएगा वो टैक्सेबल। अच्छा, शिपिंग कंपनी प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विस फ्रॉम वाई लिमिटेड कोलकाता टू कैनेडा पोर्ट, अगेन एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, टैक्सेबल। एयरलाइंस की बात करें, ओके, फ्रॉम यूएस पोर्ट टू मुंबई कस्टम्स पोर्ट, डेफिनेटली एग्जाम्प्ट बिकॉज इंपोर्ट हो रहा है। उल्टा अगर हुआ टैक्सेबल हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो रहा है। लास्ट, एग्रीकल्चर सर्विस, रिसीट्स फ्रॉम फार्म लेबर, एग्जेम्प्ट। सीड टेस्टिंग, एग्जेम्प्ट। सॉइल टेस्टिंग, एनी टाइप ऑफ टेस्टिंग इज एग्जेम्प्ट। वेयरहाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स, taxable because it is not an agriculture produce. Received on commission received on sale of wheat, okay, exempt because it is again agriculture produce. Charges for training farmers on new pesticide, exempt because it is okay, your apna, it is your agriculture know-how that you are getting, okay, it is exempt. Agriculture extension service में आ जाता है। रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू अ स्टड फार्म, यानी कि हॉर्सेस का, स्टड फार्म का मीनिंग याद रखना, टैक्सेबल। कैटल फार्म, exempt. Warehousing of rice, warehousing of rice, tell me what is it, tell me what is it, it is exempt because loading, unloading, storage, warehousing, packaging of rice exempt है, बस यही सर्विस exempt है। दूसरा सब राइस के रिलेटेड में टैक्सेबल है बिकॉज इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। चार्जेस फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स, फैब्रिक है ये, कॉटन सीड्स नहीं है, ओके, टैक्सेबल। पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग्जेम्प्ट। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वेयरहाउसिंग, एग्जेम्प्ट। वेयरहाउसिंग ऑफ स्पाइसेस, ओके, अंडरस्टैंड, ओके, दिस वाज एग्जेम्प्ट इनिशियली, नाउ इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल। एक छोटा सा करेक्शन कर लेना क्योंकि ये अभी विड्रॉ हो चुका है एग्जेम्पशन, ठीक है, दैट्स इट, डन। Now this is specifically a question asked only and only dedicated for services performed by artist, ठीक है। तो आज what is the exemption first, कि आर्टिस्ट होना चाहिए, it should be classical or folk, they should be charging 1.5 lakh rupees only, okay, only as in up to 1.5 lakh rupees, and the art form should be either dance, singing or theater, ठीक है, dance, singing as in music and theater, ठीक है। Let's see if those conditions are being satisfied. All the conditions are being satisfied, only then it will be exempt. Bollywood dance performance by a film actor in a film, consideration rupees 1,45,000, क्या हो जाएगा? बॉलीवुड डांस है, आंख बंद करके टैक्स। कर्नाटिक म्यूजिक, सिंगर, क्लासिकल सिंगर, बट प्रमोटर, ब्रांड एम्बेसडर हो तो भैया कुछ भी नहीं चलेगा, टैक्सेबल। You should be an artist, not a brand ambassador. You should be an artist, not a brand ambassador. Remember that. Carnatic music performance by classical singer, consideration charge 1,55,000, more than 1,50,000, taxable. Kathak dance performance, classical, cultural program, consideration 1,45,000, all conditions satisfied, exempt. ठीक है, perfect. Last but not the least, my dear friends, we are coming ahead with banking service, very important. इसमें अपना बैंक में पहली सबसे पहले मिस्टेक करता है पब्लिक, और वो है क्या, extended housing loan to its customers. People generally land up writing what? People generally land up writing here, exempt. तुझे
एग्जाम्प्ट which है exempt. ओके यस, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा नहीं एग्जाम नहीं है ये, इट इज नॉट अ सप्लाई. ठीक है, इट इज नॉट अ सप्लाई. नेक्स्ट, प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर्स ऑन सैंक्शन ऑफ लोन, क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, because the only thing exempt is interest or discount. Next, commission collected from its customers on bank guarantee, क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. इंटरेस्ट इनकम और क्रेडिट कार्ड, कमीशन है ना यार, इंटरेस्ट या फिर क्या डिस्काउंट है, नहीं है ना. इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड ये भी टैक्सेबल होता है भाई, प्लीज इसमें लोग मिस्टेक बहुत करते हैं. क्रेडिट कार्ड इज टैक्सेबल. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन, यस दिस इज एग्जेम्प्ट. Minimum balance charge is exempt because it is not interest or discount. Are you getting it? Yes. That's it, my dear friends. Okay, I have managed to cover all the important services that you can think of exemptions in our concept of one question for one concept. Okay, I hope this session, which has not even taken more than 1 hour, is fruitful to you. Okay, and understand that here you are listening to me, but when you do it by yourself it should take not more than half an hour for you to solve, or for that matter 15 to 20 minutes, because इसमें भी क्या है आपने शायद important mark करके रखा होगा, right? So don't you worry, I hope this was very helpful to you. In exemptions, the only way you can get confidence is read the summary notes, solve this, end of discussion. Okay, and also people who are asking, okay कि sir 1 point day स्ट्रैटेजी ये वो फलाना ढिंकाना, तो मैं बता देता हूँ क्या है. सुन भाई, इतना लोड मत लो. ओके वेरी सिंपल. 1.5 day strategy. Okay, the video will be out on 1st of November. ठीक है, which ways I would really want you to see it on the day of the exam. Also, I will be conducting a Zoom session. Okay, on what date? 31st October. It will be mix of both. It will be mix of the mistakes that you can do on the day of the exam, plus it will be a session, okay, where there will be slight motivation, not much more motivation that can keep you going. Because what I have seen of lately is that instead of your productivity going up, it's actually going down, and that happens because understand that you are in the last lap of the exam. So there will be fatigue, there will be days where you are like damn, यहाँ पे तो क्या है 100% प्रोडक्टिविटी होना चाहिए पर मेरा 50% ही क्यों है. होता होगा, ऐसा होता होगा, आई एम श्योर होता होगा, राइट? मेरे साथ हुआ. चिल करो, इतना स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस नहीं लेना अपने को. वी हैव टू गेट थिंग्स डन, राइट? देयर विल बी डेज इवन टुडे when you will set very ambitious targets and you will not land achieving them, and what will happen is again that will demotivate you. So all I want you to do is not focus on those things that you cannot achieve. Try to achieve as much as possible, try to push yourself as much as possible, but still take 6 to 7 hours of sleep. Okay, don't compromise on sleep. The less you sleep, the more you will experience fatigue and lack of enthusiasm, and that we cannot afford. We want at least 12 से क्या है 15 घंटा तुझ तो पढ़ रहा है हर रोज. We want that it should be with optimum energy and optimum enthusiasm, right? Yes. If you really want to talk to me, Mr. P, the number is out there. Okay, ऊपर मेरे ही ऊपर यहाँ पे लिखा है, अगर आप चेक करोगे फिर भी मैं लिख देता हूँ 8879727727. ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हो, राइट? आई विल बी एट योर सर्विस, डोंट यू वरी. नेक्स्ट 3 दिन थोड़ा मैं बिजी होऊंगा, बट आई विल बी डेफिनेटली अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप. आई विल बी कंटिन्यूसली रिप्लाइंग यू गाइज, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ. ठीक है, एंड यस, योर पेपर्स विल बी ओके, ऑलरेडी चेक हो गए हैं, काफ़ी लोगों को मेल भी हो गए हैं. जिनके नहीं हुए, आई एम ट्राइंग कि आज या कल में मैक्सिमम हो जाए. ओके,
and there will be one video on how to write the IDT paper, that also you can easily see it, okay, on 31st. ठीक है, दैट्स इट. ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ज़्यादा क्या है, अभी आप दिमाग मत लगाओ, जितना हो रहा है उतना करो, और जितना हो सके उतना ही अटेम्प्ट से खींच कर कुछ लेके आओ. ट्राई टू suck those marks as much as possible as you can. ठीक है, that's it. All the very best, guys. I hope this effort of exemptions made some sense, and share it with your friends whom you think may need it. ठीक है, okay.